हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्वेश्चंस स्पेशली आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कुछ आपके पास आइडेंटिटीज हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम कुछ वैल्यूज पुट कर करके लगातार देखते रहें, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। तो कितनी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं? सो एक मेथड बनाया गया कि किसी भी आइडेंटिटी को चेक अगर हमें करना है तो कितनी वैल्यूज तक उसको चेक करना है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मेनली 3 स्टेप्स बनाए गए हैं किसी भी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। आपके पास 2-3 किस्म के क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। सो आई विल बी डिस्कसिंग टुडे 2 टाइप्स, यानी एक आपको कोई आइडेंटिटी दे रखी है, यू हैव टू जस्ट चेक क्या ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू है। यहां पर हम नेचुरल नंबर्स के लिए बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया जाता है कि कुछ वैल्यू दे रखी है, यानी कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको चेक करना है कि क्या वो किसी एक स्पेसिफिक इंटीजर या नेचुरल नंबर से डिविजिबल है हमेशा। यानी अगर कोई पावर है उसकी इन टर्म्स ऑफ n या x या k की पावर, तो अगर मैं k की वैल्यूज चेंज करता रहूं और कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वो अलजेब्रिक टर्म किसी एक स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आइडेंटिटी उठाते हैं पहले, फिर डिविजिबिलिटी वाली बात करेंगे। तो कहता प्रूव दैट वन upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus so on up to 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2 is always equal to n by 6n plus 4. This we need to check. क्या ये आइडेंटिटी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अ नेचुरल नंबर ट्रू है या नहीं है। सो स्टेप नंबर 1, आई एम राइटिंग इट स्टेप वाइज। इन द एग्जामिनेशन यू नीड नॉट टू राइट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव टू डू फॉर स्टेप 1, we check it, put, because we know the smallest natural number is 1, so we will check this for n is equal to 1. So the left hand side will come as, अगर मैं n को 1 पुट करता हूं, तो जस्ट चेक इट आउट। अगर n को 1 पुट करते हैं, 3 minus 1 that is 2, यानी ये पहली ही टर्म आ जाएगी 3 plus 2 यानी 5। तो फर्स्ट टर्म आ गई 1 upon 2 into 5 which is 1 upon 10, and for the right hand side it will be 1 upon 6 plus 4 that is also 1 by 10. So what we will write? We'll write it is true for n is equal to 1. Step number 2, अब अगर ये किसी एक वैल्यू यानी n is equal to 1 के लिए ट्रू है, तो डेफिनेटली किसी एक और वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी। लेट अस assume that it is also true for some n is equal to k. So what we will do, we will change all the n's into k and we will suppose that it is true. So it will be like 1 upon 2 into 5. Sometimes ये कंफ्यूजन आ जाता है जब क्वेश्चन आता है ये 2.5 तो नहीं है। सो यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो कई बार ये कंफ्यूजन भी बच्चों के माइंड में आ जाता है कि कहीं ये डॉट तो नहीं है। नो, इट इज नॉट डॉट, it is multiplication. So we will change it for k. It will come as 3k minus 1 into 3k plus 2, and here also it will become k upon
6k plus 4, and we'll put it as equation number 1. Now 2 steps are over, and now the most important step for this question is step number 3, which says that अगर हम मान लेते हैं ये k के लिए ट्रू है, और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगी. नाउ वी शैल प्रूव दिस फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू आई 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus so on. अब अगर मैं यहां k तक तो मुझे मालूम है, k plus 1 का मतलब इससे एक अगली टर्म और होगी, यानी ये टर्म तो आएगी ही आएगी, इससे आगे एक टर्म और आएगी, तो आपने ये टर्म एज इट इज लिख देनी है. और इससे अगली टर्म क्या बनेगी? अगर मैं k की जगह पर k plus 1 लिखता हूं तो इट विल बी लाइक दिस. Here also k plus 1 and plus 2, and for the right hand side also it will be like k plus 1 6 into k plus 1 and plus 4. So it will become 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus so on up to 1/3k minus 1 into 3k plus 2 plus 1/, ये क्या बनेगा? It will become 3k plus 3 minus 1 means 3k plus 2, and this value will be 3k plus 5, and here it will be k plus 1/6k plus 10. You can check it out. So अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे and we will prove that this left hand side is equal to this right hand side. So taking left hand side, अगर हम इस left hand side को उठाते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है that is equal to k/6k plus 4. So this left hand side will become, क्या आ जाएगा आपके पास? It will be k/6k plus 4 plus, और यहां से आ जाएगा आपके पास 1/3k plus 2 into 3k plus 5. I hope it is clear to everyone. Now I can take out 2 common from it, so it will be k/2 into 3k plus 2 plus 1/3k plus 2 into 3k plus 5. So your LCM will be twice 3k plus 2 into 3k plus 5. Your LCM will be like this, and this value will be k into 3k plus 5. You will divide, so 3k plus 5, k into 3k plus 5 plus. Now if I divide by this, so we'll get 2, so it will be 2 also. So what will be the value here? It will become 3k square plus 5k plus 2 upon twice 3k plus 2 into 3k plus 5. Now we'll factorize this. Multiply करके 6, add करके 5, 3 and 2, so it will be 3k square plus 3k plus 2k plus 2 upon 2 into 3k plus 2 into 3k plus 5, and 3k common, k plus 1 plus 2 common, k plus 1, 2 into 3k plus 2 into 3k plus 5. Here it will be 3k plus 2 into k plus 1 upon 2 into 3k plus 2 into 3k plus 5. Cancelled? So it will come as k plus 1 upon, if I multiply to this, it will be 6k plus 10, and which is equal to the
right hand side, it implies it is also true for k plus 1. It is true for n is equal to k plus 1. So it is true for every value n which belongs to the natural number. This is the only simple way from principle of mathematical induction कि अगर आपको किसी आइडेंटिटी को प्रूव करना है. एक और आपके साथ कंसेप्ट शेयर करते हैं कि अगर किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करना है. सो लेट्स चेक दी डिविजिबिलिटी ऑल्सो. तो आपको डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं. उसमें भी ये 3 स्टेप्स हैं. आपको ये 3 स्टेप्स अपने माइंड में सेटल करने हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है. सो नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल. प्रूव दैट 2 raised to the power 3n minus 1 is divisible by 7 for every value of n, means natural numbers के लिए. तो step 1 आपने वही किया, put n is equal to 1. It will be 2 raised to the power 3 minus 1, 8 minus 1 7. It is divisible by 7. तो पहला काम हो गया आपका. स्टेप नंबर 2 के अंदर हम करते थे, लेट अस assume that it is true for some n is equal to k. So it will be 2 raised to the power 3k minus 1 is multiple of 7. I'll just write down multiple of 7, or you can write it as 7 into something. So definitely अगर 7 से डिवाइड होता तो 7 into something आएगा ही आएगा. I'll write it as equation number 1. Step number 3. Now we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1. अब k plus 1 की वैल्यू पुट करते हैं. 2 raised to the power 3 into k plus 1 minus 1. It will become 2 raised to the power 3k plus 3 minus 1, or I can write it as 2 raised to the power 3k into 2 raised to the power 3 minus 1. Can I write it as 8 into 2 raised to the power 3k minus 1? Now the value of 2 raised to the power 3k will be written as 7m plus 1 from equation number 1. It will be 8 into 7m plus 1 minus 1. So it will become as 8 into 7m plus 8 minus 1. And it will be 8 into 7m plus 7. This is also multiple of 7. This is also multiple of 7. And we know that sum of two multiples of 7 is also a multiple of 7. So we'll take out 7 as common. It will be 8m plus 1. So it implies it is divisible by 7. It implies it is true for n is equal to k plus 1 also. So it is true for every value of n which belongs to the natural numbers. So ये दो कंसेप्ट हमने आज आपके साथ डिस्कस किए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके बताइएगा. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.